So today we will just discuss about what is an IoT. So firstly we will discuss about IoT is the Internet of Things, describe the network of a physical object. So when here we are talking about a physical objects, or we will say that the hardwares that are basically important in the form of a network when we are talking about the network. Physical objects, things that are embedded with the sensors. Here we are talking about the sensors and the softwares and the other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and the systems over the internet. So what we are talking about, we are just talking about the different physical objects here that will be connected or that will be used, that will be connect with the sensors, softwares, and the other technologies, right? So IoT is a system of interrelated computing devices. So here we are talking about a physical object. So here we are talking about the hardware, electronic, and the electrical objects here, all the devices. So is a system of a interrelated computing devices, mechanical and digital machines, object, animal, or the people that are provided with unique identifiers. So here the unique identification is important, and the ability to transfer data over an internet or a network without requiring human to human or human to computer interaction. So here we are not talking about the interfaces here. So again, IoT is a system, or IoT is a network of a physical objects or the things. So two definitions we are getting here. The IoT is a network of a physical objects, and the IoT is a system that for the different mechanical digital machines which are basically interrelated computing devices. So now IoT की exact definition आप क्या बोलेंगे? According to a definition of a IoT, it is the way to interconnection with the help of a internet devices that can be embedded to implement the functionality in an everyday object by enabling them to send and receive data. So you must have, if you have uh, talked about earlier, this remote procedure call. क्या किसी ने ये टर्म सुना है, remote procedure call? Or the basically a receiver and the sender of a particular data from one location to another location in the internet, or whatever we are doing here, I am showing you a screen which is basically sharing, and you can see that screen or a data on your computer. So this data is basically transferred through the network, right? So here we are talking about, it is the way to interconnection with the help of internet devices. So here I am also using an internet, you are also using an internet. Somewhere the interconnection between the internet devices that can be embedded to implement the functionality in everyday objects by enabling them to send and receive data. मैंने नेटवर्क पे अपना डेटा सेंड किया और आप नेटवर्क पे ये डेटा रिसीव कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, राइट? सो दिस इज अ, एंड इन दोनों कामों में जो बीच में आपका डिवाइसेस और इंटरकनेक्शन के लिए जो डिवाइसेस लगे हैं उसके हम यहाँ पर IoT बोलते हैं. टुडे डेटा इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. अब डेटा की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट्स अ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स which have some implicit meaning. Or today data is everything and everywhere. How we are saying that data is everything and everywhere? Data ही क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली जनरेट हो रहा है, राइट? आप अभी भी डेटा जनरेट हो रहा है. अगर मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो ये डेटा जनरेट हो रहा है, राइट? तो अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो भी डेटा जनरेट हो रहा है. आप कुछ फेसबुक पे एक्सेस कर रहे हो तो भी डेटा जनरेट हो रहा है. आप कुछ अपलोड कर रहे हो तो भी डेटा जनरेट हो रहा है. तो हर जगह इंटरनेट में डेटा इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, राइट? और डेटा, अगर हम डिजिटल डेटा की बात करें इंटरनेट पे, तो डेटा कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है? क्या आप मुझे कोई बता सकता है? थोड़ा सा डेटा का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बिकॉज इंटरनेट है तो डेटा तो हमें पढ़ना ही आगे. In how many forms the data is present over the internet? What are the different kinds of forms of a data? क्या कोई बता सकता है? मैम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस. राइट. सो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस. सो अगर हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में डिवाइड कर दें तो डिजिटल डेटा बेसिकली 3 फॉर्म्स में है.
एक तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की बात करें तो प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, whether it's a Excel or whether it's any database software we are using, where the data is basically representing in form of a tabular form, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा है, जिसके लिए हमें बहुत ही लिमिटेड स्पेस की जरूरत है ओवर नेटवर्क उसे स्टोर करके रखने के लिए। सर्वर में हमें बहुत लिमिटेड स्पेस चाहिए अगर हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी डेटा है। सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो आपकी ईमेल्स हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तो है लेकिन उसमें पैराग्राफ भी है, कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट भी है, तो समवेयर और द लॉग फाइल्स और द जो लॉग फाइल्स आपकी ओवर द इंटरनेट जनरेट हो रही है, एक्सएमएल जिसमें हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, वो लॉग फाइल्स आपकी सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। समवेयर वी आर यूजिंग अ स्ट्रक्चर बट नॉट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। और कुछ डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। अब अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, और वही डेटा सबसे ज्यादा है विच इज द अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। और वो डेटा सबसे ज्यादा है इसलिए हमें स्पेस भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट तो ठीक है बहुत कम स्पेस लेता है स्टोर करने के लिए, हमें बहुत कम स्पेस चाहिए, लेकिन ऑडियो, वीडियो, इमेजेस ये सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं जब हम नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, राइट। सो डेटा इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट। अभी इसलिए बिग डेटा टर्म इंट्रोड्यूस है, ठीक है। बिग डेटा है, बहुत सारा डेटा है, विद इन अ सेकेंड्स पेटाबाइट्स, गीगाबाइट्स में डेटा जनरेट होता है। आप किसी एक प्रोफाइल पे भी क्लिक करते हो या कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो उस पर क्लिक करते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन करते हो, वो भी एक डेटा जनरेट होता है। तो सब हर जगह इंटरनेट में डेटा ही है जनरेट हो रहा है, और वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, तो बहुत सारा काम आपका बढ़ जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेटा एंड व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड इन ऑन अ इंटरनेट टू अ नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डेटा क्लियर है आपको कि व्हाट वी आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ डेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन IoT. Hence, the IoT can also be defined as the analyze of a data generate a meaning action triggered subsequently after the interchange of a data. Now, how you will explain this statement? IoT can also be defined as the analyze of a data generate. अब इतना सारा डेटा जो आपका विद इन अ सेकेंड जनरेट हो रहा है ओवर इंटरनेट, उस डेटा को कहीं ना कहीं एनालाइज करना है, उसमें से मीनिंग निकालना है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, जिसके थ्रू जो बिजनेस है आपको आगे अपना चलाना है। अब डेटा रिपीटेड फॉर्म में भी जनरेट हो रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है यहाँ पर कि जब भी आप कुछ ऑनलाइन परचेज करते हो या परचेज नहीं कर रहे होते हो, आप उसको एक्सेस कर रहे होते हो, उसको बार बार उसकी डिटेल देख रहे होते हो, तो अगर आप कोई और भी काम कर रहे हो तो उसका एडवर्टीजमेंट बार बार पॉपअप होता रहता है। वो सब डेटा आपके बारे में जनरेट हुआ है, राइट। एडवर्टीजमेंट होता है, बिजनेस आगे होता है, तो वो पॉपअप जो है वो ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर इज अ इवेंट जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है किसी एक एक्शन के बाद, राइट। सो IoT कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनालाइज ऑफ अ डेटा विद जनरेट अ मीनिंग एक्शन, जो किसी मीनिंग एक्शन के लिए जनरेट होता है। जैसे जो भी मैंने आपको एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल दिया, आपके लिए कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक है, आपके डेटा से फर्दर उसको मीनिंग को निकाला गया कि ये प्रोडक्ट में ये इंटरेस्टेड है कस्टमर एंड ही विल बाय दिस इन फ्यूचर। बार उसके कंपैरिजन से उससे रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको शो करते रहते हैं, वो ट्रिगर होते हैं ऑटोमेटिकली। ये एक्शंस ट्रिगर सब्सिक्वेंटली आफ्टर द इंटरचेंज ऑफ अ डेटा। जब आपका डेटा नेट पे जाता है, आप भी नेट से डेटा, इंटरनेट से डेटा जो उठाते हो आफ्टर interchange of data. Now, IoT can be used to build applications, definitely, to when we are talking about the internet here, for the agriculture. And now how the agriculture में कैसे IoT आपका एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज होगा? एसेट ट्रैकिंग, एनर्जी सेक्टर, सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी सेक्टर, डिफेंस, embedded application, education, waste management, healthcare products, telemedicine, smart city applications and etc. तो यहाँ पर हम ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। लास्ट में तो पूरी यूनिट ही आपकी एप्लीकेशंस की है, IoT एप्लीकेशंस। बट एग्रीकल्चर की बात करें, सो नाउ अभी तो इंटरनेट से ही सब कुछ दिया जा रहा है, तो जो प्रॉपर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है,
जो आपका रिसर्च सेंटर है, जो डिफरेंट एग्रीकल्चर्स में आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे रिलेटेड डेटा जनरेट हो रहा है नेट पे, राइट। तो बहुत कुछ आप यूज कर रहे हो, राइट। तो हियर सो ये एक छोटा सा डायग्राम है आपका, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्रॉम कनेक्टिंग डिवाइसेस टू ह्यूमन वैल्यू. So Internet of Things from connection to benefit. What benefits we are talking about? Device connection and the connectivity. IoT devices. अब इंटरनेट में डिवाइस तो होगा, मैं भी एक डिवाइस यूज कर रही हूँ, आप भी एक डिवाइस यूज कर रहे हो. IoT connectivity. Somewhere I am using the Wi-Fi connection. You are also using the Wi-Fi connections. Embedded intelligence, right? So Internet of Things from connection to the benefits. First, here we are talking about device connection and the connectivity. Then we are talking about the data sensing and the collecting. Whatever I am doing on the internet, my data will be collected. और simply जब मैं मैप गूगल मैप यूज करती हूँ तो सेंसर के थ्रू और कलेक्टिंग मेरा डेटा कलेक्ट हो रहा है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, प्रेजेंट लोकेशन, whatever. So data sensing and the collecting. Then the data transport and the access, right? Data transport and the access will be there. Obviously, when we are talking about data connectivity, data sensing or the device connectivity, somewhere the data will be transported from sender to receiver or the receiver to the sender. Then the data analytics we are talking about, again, from the huge data lake which is generating over the internet, we are basically using various analytic techniques to fetch a meaningful data for us. Then the data value defined by action. All are interrelated with each other. Data value defined by actions, or in a data analytics, we are talking about the big data analysis, right? Big data analysis. Again, we are using the different technologies or the softwares which is present, which help us to map the data from the internet, right? Now the AI and the cognitive analysis at the edges, we are also talking about the artificial intelligence. The another subject which I am taking yours is the artificial intelligence. We will discuss what is AI there. Now the data value analyze to action, analysis to action APIs, application programming interfaces here we are talking about, and the processes actionable intelligence, right? So data value. So further, whatever the analytics you are performing, you will get some data value according to the event triggered, according to the action that you have performed on a data analytics, right? Then the human value, the various applications and the experiences. With the help of this human value, we are discussing here about the various smart application which is present now, which help the particular human. Again, the smart application here, we are talking about the Google Map only, right? The stakeholder benefits, right? So here we are talking about the complete Internet of Things from connecting devices to a human. पहले आपका डिवाइसेस कनेक्टेड है, देन द डेटा सेंसिंग के थ्रू डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन डेटा एनालाइज कर रहे हैं, देन डेटा वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, देन ह्यूमन को हेल्प कर रहे हैं. तो ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो दिस इज अ basic diagram that we are talking about here. So however, all complete IoT systems are the same in that they represent the integration of the four distinct components. So four distinct components we are talking about here: the sensors, the devices, the connectivity, the data processing, and the user interface. Again, here I am talking about the login application web page. So user interface, मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया कि हमारा जो भी हम नेट पे कर रहे हैं, आप जीमेल का कोई भी लॉगिन पेज लेते हो, वो लॉगिन पेज में जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, यूजर नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, देन आपका साइन इन का बटन है, वो क्या है, यूजर इंटरफेस है, वो क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है, राइट. उसके बाद डेटा कनेक्टिविटी है, उस प्रेजेंटेशन लेयर के बाद एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में लॉजिक एक्सप्लेन है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम एक्सप्लेन है कि करेक्टर बाय करेक्टर यूजर नेम पासवर्ड मैच होगा डेटाबेस में से या कैसे मैच होगा. तो एक यूजर नेम पासवर्ड जो यूजर ने डालना है और एक बहुत सारे यूजर नेम पासवर्ड जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है. तो डेटा प्रोसेस होगा, ठीक है. डेटा प्रोसेस कैसे होगा, कनेक्टिविटी के थ्रू होगा, बीच में कनेक्टिविटी होगी जो यूजर इंटरफेस और प्रेजेंटेशन लेयर और डेटा लेयर के बीच में होगी. तो दीज और द कंप्लीट IoT सिस्टम हियर वी आर टॉकिंग अबाउट.